Hello to a very, very random vlog and also the last vlog of 2021. It has everything, right from home decor to fitness to a fashion haul as well. I hope you guys enjoy it. Oh my god, I just woke up to a very good news of a wedding. Obviously not me. I hope you understand. मेरा एक friend की शादी हो रही है. I'm so excited. I have so many things to look forward to next year. Touch wood, सब सही रहे बस. मेरे ना बाल बहुत ऑयली एंड वियर्ड हो रहे हैं, सो आई एम प्लानिंग टू वर्कआउट जल्दी से एंड देन वील डू अ हेड वॉश एंड देन स्टार्ट विद द रील शूट. सो आज का एजेंडा है टू शूट अ reel that is for a brand, a shoe brand. So it's going to be like a fashion styling reel, and I'm very excited because ये मेरी पहली winter look वाली reel होगी, and a lot of people have been loving the reel. So yay! It's officially that weather where you feel like बाल धुलने के या नहाने के बाद सीधे balcony में जाके थोड़ा धूप वूप सीखो. But my balcony is getting painted and बहुत गंदगी है वहाँ पे, तो I can't even do that. Also, I think ये weather change में hair dryness, hair fall is something we all can bond over. Like everybody is going through that phase. And to make my hair a little more presentable for shoots, I go on with more heat on them. But I recently received 2 products from Lotus Organics that have really changed my hair game. Lotus Organics is a cruelty-free brand which uses organic ingredients in their purest form. So the first one is a very unique hair fall control revitalizer made with pure cold pressed 100% certified organic rosemary essential oil and red onion extract. This is like a hairspray which will detangle your hair at the same time keep them smooth and manageable. The non-greasy sulfate-free formula helps to control hair fall and also helps with split ends and adds a volume. It is SLS paraben, mineral-free and also maintains the pH of the hair. Now this isn't like that greasy hair serum, it's a very lightweight hair serum. This one doesn't make your hair oily to make them shiny. It gets absorbed very quickly, maintaining the fresh look. You can see its watery consistency and the spray bottle makes it more convenient to use as well. I just spray it on my palm, massage it thoda sa, rub it thoda sa and then apply it on my hair and that does the job. It's a non-sticky, non-greasy leave-in formula that will protect your hair from the damage as well. Now the next product is their hair fall control hair mask. Now this also has the rosemary essential oil, red onion and shea butter which will actually nurture and moisturize your hair. Now this one also doesn't weigh your hair down and it works in minutes in restoring hair hydration levels and also making your frizzy hair manageable. I really like the packaging and all as well. It looks really luxurious as well. And now this hair spa treatment gives back energy and life to your dull and dry hair. I don't know how many of you realize, but the overall pollution in the air and the sun as well makes your hair dry to some extent, and this hair mask will protect your hair against that. Now the texture of the mask is really buttery and velvety. You need to use this on your clean damp hair, so every time you shampoo basically. Apply the mask from root to length up section बना के भी कर सकते हो या keep it on for 15 minutes and then just wash it off with plain water and you will see results with each wash. Also I have to mention the lid is very convenient. मतलब कुछ hair mask के lids में ना ऐसा एक holder सा नहीं होता है, तो मुझे वो खोलने में after shampoo while I'm in the washroom is very inconvenient. Both the products will be linked down below. Also my code will be mentioned for you guys to get a better deal at these products. मुझे अभी I need to shoot a branded reel and a YouTube video as well. So yeah, let's do that. I just completed my workout and मैंने Amazon से skipping rope मंगवाई थी because September में ही मेरी skipping rope टूट गई थी and I ordered a very fancy one which comes with a counter. I was so excited about it and it actually works. I think now I can do that 1000 skips per day वाला challenge for a week. Like I'm thinking about it. आज मैंने 350 ही करे यार, dude, मेरी हालत खराब हो गई थी बिकॉज इससे पहले मैंने वर्कआउट भी किया था. सो यू हैव टू कीप दिस वन इन योर राइट हैंड. अगर ये इस हाथ में होगा ना एंड यू कीप स्किपिंग तो स्कोर पीछे भी जाता है. मैंने 100 तक किया था एंड उसके बाद आई डिड 50 एक साथ एंड
जब मैंने स्कोर देखा तो इट वाज 54. ये पुश बैक करते ही इट कम्स बैक टू 0. इट्स टू गुड. Hello, so we are going to Lucknow Mahotsav. Now Lucknow Mahotsav is like an annual handicrafts mela and all वाला thing. Like पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो I'm so excited to go back there. I think everybody from Lucknow has बचपन की यादें with Lucknow Mahotsav because चाहे वो झूले हो, शॉपिंग हो, खाना पीना हो, it's just a very इवेंटफुल थिंग जब लखनऊ महोत्सव लगता है. पहले ये बहुत दूर लगता था हमारे घर से, तो हम एक ही बार जाते थे, बट हम इतनी पास में लगता है कि पहले हम फैमिली के साथ जाओ, फिर फ्रेंड्स के साथ जाओ, फिर वापस मासी लोगों के साथ जाओ. इट्स रियली फन. सो या, एंड इस बार आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई विल हैव थिंग्स टू बाय एज वेल. लाइक वहाँ पे होम डेकोर वगैरह बहुत अच्छा एंड अफोर्डेबल मिलता है. सो आई माइट पिक अप थिंग्स फॉर माई हाउस एज वेल. दिस इज माई आउटफिट, लाइक ब्लैक रिब्ड pants जिसके अंदर मैंने slacks पहनी because I will feel cold. This is a very old top from Shein, a denim jacket that I thrifted from an Instagram store. This is a very nice evil eye pendant from the Jewelin store. I linked them. This cover जो मुझे बहुत पूछा जाता है, it's from kalakar.in. Yeah, that is all. And 4 shoes. काफी छोटा लग रहा है ऐसे तो. इधर उधर फैल के लगता है. फैल के, और बड़े बड़े गेट्स होते थे बीच पे ही, डिवाइड करने वाला है. बहुत बड़ा लगता था, अभी छोटा है. एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है असेंबली हॉल टाइप का. रिंग जा रही है. परफेक्ट. यहाँ पे इतना इशू है, लोग खो चुके हैं हमारे साथ. बहन कहाँ पे हो? हम इसमें 360 में जाने की बात कर रहे हैं. पैसे किसके गिरे? कुछ तो गिरा था ऊपर से, पर क्यूट है यार ये वाला. क्या प्लैटर? हाँ, कह रही थी वो. This stall was literally selling 3 cushions for 500. And they had some really cute pieces as well. So the end of the Mahotsav is the best stuff. यहाँ पे एकदम वो बंजारा वाली चीज़ें 150 और 200 में मिल रही है. एंड वी शॉप फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट अ लॉट, लाइक 4-5 चीज़ें ली हैं. एंड 10 रुपये में आप उसको पॉलिश भी करवा सकते हो पीछे यहाँ पे. एंड अभी हमने फिर से पापा को कॉल किया है कि आई थिंक स्कूटी पे सब कुछ नहीं जा पाएगा. वी डू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ, तो पापा आ जाएंगे तो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा. ये हो थोड़ा कितना कूल लगेगा एज अ वॉल डेकोर. मेरे को पता है ये भी बहुत अच्छा लग रहा था. ये द बेस्ट स्टॉल एवर. चटकारा जयपुर वाले का चटकारा. This is all sorry that we shopped for. So घर आए हुए में 1 घंटा हो चुका है. We are sitting with a lot of food here. Actually दीदी के आने का टाइम is 6:30 and उस टाइम पे हम obviously मेले में थे, तो we got चाप packed. I was supposed to be eating healthy, but ठीक है, it's all cool. And 3 दिन बाद we've booked the tickets for Spider-Man Far From Home. नहीं, sorry, No Way Home. And मेरे भाई ने Far From Home नहीं देखी है. मैं देख चुकी हूँ. तो अभी हम वो देख रहे. Thank God it's on Netflix. पहले मुझे लग रहा था, पहले वो Netflix पे नहीं थी एक्चुअली, तो हम YouTube पे करके देखने वाले थे या फिर डाउनलोड करके. बट इट्स देयर ऑन Netflix, so yay. ओके बाय. मेरा भाई चिढ़ रहा है कि मैं बोलती जा रही हूँ.
Alright, so it's haul time and मैं ऐसे day 1 day 2 करके नहीं दिखाने वाली हूँ. I'm just gonna go in random orders. So सबसे पहले we went to the crockery वाला stall जिससे first time कुछ भी नहीं लिया because my friend kept saying कि आगे और stalls हैं. But वापस आते वक्त मुझे फोम हो रहा था कि मैं छोड़ के नहीं जा सकती. So we finally bought this cup. ये मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था इनसे. The color, the style, it's so elegant and cute and प्यारा सा. And I've started drinking black coffee in it. I made sure कि मैं 3 दिन का गैप रखूँ अपनी black coffee by the way. Got them for 50 each. Not a bad deal. Same shop say we bought these bowls. Oh my god, I fell in love with the color and the style. एक तो anything in teal just stands out, be it in crockery or home decor. Also bought these tiny little vases, मतलब in lavender. They also had this very bright parrot green, but मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया. So I bought 2 of these in lavender. I still have to figure out मुझे इसके साथ करना क्या है, but these are super cute. And I got 2 of these for 50. So 25 के एक. Then जो cushions वाली शॉप थी वहाँ से I bought 3 cushions for just 500. पहले 2 are these armrest like rectangular sort of cushions. Thankfully मुझे ये pair मिल गया and the color thing is just perfect. मैं instantly ना थोड़ा yellow grey के combination से attract हो जाती हूँ and I consider myself very lucky कि मुझे ये दोनों set मिल गए and साथ में एक बड़ा सा squishy सा yellow cushion भी मिल गया. It's velvet finish वाला. पहले 2 वाले थोड़े jute sort of fabric में like वो shiny velvet वाला material या suede वाला material नहीं है. Yellow वाला is in this suede material I think और better material में and it exactly matches the yellow one. I feel ये पूरा set ही साथ में बहुत cute लगेगा. I have bought some really nice furniture तो मैंने ये cushions उसके लिए लिए हैं not for this sofa. Talking about the बंजारा वाली shop मैं collectively सब कुछ दिखा देती हूँ ना. इस shop से मैंने बहुत सारी random चीज़ें उठाई हैं. It might not make sense to you right now but मेरे दिमाग में जो idea है for the wall decor, I think ये सब साथ में बहुत अच्छा लगेगा. अभी individual pieces might not make sense to you. So पहले I got these 3 frames. 2 दिखा रही हूँ, ऐसे 3 लिए हैं मैंने for 100 each and I feel बहुत pretty हैं. They also have a stand, तो मैं ऐसे अपने किसी desk पे भी रख सकती हूँ और I can hang them on the walls. Then I got this huge random सा wooden piece. This can be used as a photo frame or just as a wall hanging piece as well. I'm still confused मैं इसमें photos वगैरह लगाऊँ कि ना लगाऊँ, but yeah, this was for 200 rupees and I really liked it. Then I got 2 random wooden pieces. एक has this very beach vibe to it. The arrow sign has. I have this idea कि मैं थोड़ा beach and tropical vibe wall decor करना चाहती हूँ तो उसके लिए this was perfect. And the other piece is also sort of related to it. I got this veil. For just 100 rupees. मुझे बहुत क्यूट लग रही थी. मैं तो ऑलमोस्ट छोड़ के जाने वाली थी फिर मेरा मन नहीं किया. It's too cute. I also got this cute सा heart shaped photo frame. मेरे भाई ने मुझे पहले दिन मना कर दिया था कि ये तुम नहीं लोगी. फिर मैं सेकंड डे जब अपूर्वा के साथ दी तो मैंने उठा लिया. I was like आज मेरा भाई ने मुझे मना करने के लिए I'm gonna get it because मुझे बहुत क्यूट लग रहा था. And this was just for 50 rupees. And the last piece from this stall was this wooden shelf. It's in grey color. उस पे golden थोड़े से designs भी बने हुए हैं. So मेरे घर के main entry के बगल में एक yellow wall है जो खाली है. So I want to get this fixed there so that I can keep all the locks and keys वहीं पे like on this shelf. And the last item is a carpet. I got this circular छोटू सा carpet. As you can see the colors ये भी वही grey, yellow and white में थे. ये मुझे 750 का बोला गया था but I got it down to 400 rupees. I know कुछ लोगों के लिए ये बहुत महंगा होगा but मेरे लिए this was enough. I'm happy with 400 rupees because the quality is really good. कोई cuts वगैरह नहीं है. ये मैंने actually study वाले corner के लिए लिया है but अभी वहाँ लगाया नहीं है. I will do that very soon. Also मैंने recently एक Amazon haul किया था. So that was in association with Amazon and I had ordered a lot more things जो time में आई नहीं. तो मुझे जल्दी जल्दी भी वीडियो बनानी पड़ी because they had a strict deadline and I received the other part of my haul. इसमें 3-4 चीज़ें होनी चाहिए. So the thing is ये ऐसा ब्रांड है on Amazon which actually has a lot of trendy pieces. So I was thinking कि या तो मैं एक proper reel बना देती हूँ जो generally काफ़ी चल जाती है on Instagram. But then मेरा मन नहीं माना. I wanted to do it on YouTube as well. I'll make a reel afterwards. I really don't remember कि मैंने क्या क्या order किया था but as you can see very basic colors.
So I am actually very impressed with this top. पहली चीज़ का material and all is really nice. मैंने इसी brand से एक dress दिखाई थी black color की from the same brand of the same material, but उसके collars बहुत पीछे जा रहे थे. But you can see the collars here. The quality is also great. It's comfortable and the white top is thick enough to not be very see-through. Like I am not wearing a nude bra underneath, but I don't think so. It's very visible. And yeah, I am happy with this. I really wished ये आ गया होता उस हॉल के टाइम पे because this is a very good buy and this was just for 425 rupees. ऐसे टॉप्स H&M and all में I think they cost way more than this price. So yeah, if you're looking for a basic white top, I've got covered. ओके इम्प्रेस करने के बाद डिसअपॉइंट भी कर दिया साइड बॉम्ब ने बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड अ वेरी ब्रॉड नेक टॉप. इसमें पता नहीं कट क्यों है. आई डोंट लाइक इट एंड या इट्स नॉट फुल स्लीव्स एज वेल. आई वाज एक्सपेक्टिंग फुल स्लीव टॉप बट क्वालिटी वाइज अच्छा है. ऑफ कोर्स इट हग्स मी everywhere and it's a nice ribbed material. Again 425 का ही है but it's not what I ordered. Okay, so I am very confused about this top. So style wise it's exactly what I expected it to be but color is again different. I expected a very dark brown color. This is like a medium brown color. It's not bad. Quality वगैरह तो सब कुछ सही है but it's not the same color. Also I'm really happy with the fact that इसका जो bust वाला area है it's actually good enough for my size. Usually bust वाली area कभी कभी छोटी पड़ जाती है especially when you order from Urbanic या Shein जैसे brands but this one is perfect. I love it. I think black वाला return होगा. White वाला तो मैं रख रही हूँ. ये वाला I'm still a little confused but I like it. ये सारे tops 425 के थे and I feel they are worth 425 rupees. I really like it. So I don't know. So I'll check that. ये disturbance is a sign that I should end the vlog here. Actually ऊपर काम चल रहा है. I was lucky कि थोड़े बीच में शांति हो गई ना. I was able to shoot this part because मैं सुबह से कुछ भी shoot नहीं कर पा रही हूँ. But yeah, that was all for this vlog. I think this is the last vlog. Like this sort of vlog. एक दो videos और आनी है but this is the last vlog of 2021. Next vlog तो अब next साल ही बना पाऊंगी because 5 दिन में साल खत्म होने वाला है. Oh my god. But yeah, I really hope you guys enjoyed this vlog. Yeah, if you're watching my face for the very first time, hit the red button to join the Sunflower Squad. Also, the 100k Sunflower Squad giveaways are still live. I'm gonna keep them live till New Year's. उसके बाद I'll start announcing the winners on my community post. So yeah, you still have time to participate in the giveaways. Just search for this hashtag. And that is all for this video. I'll see you next time. Bye.